So today we will do c raised to power n. c raised to power n कौन सी स्पेस होती है बेटा जी? This is the space of all n tuples of complex number. इसको unitary space भी कहा जाता है, ठीक है? Prove that the space, prove that the space, the unitary space, आप यहाँ पे लिखेंगे word, the unitary space c raised to power n is an inner product space under the map this, under the map this. अब यहाँ पे हमारे पास क्या आएगा बच्चे? यहाँ पे c आएगा, ठीक है? Defined as inner product of xy is equal to summation I running from 1 to n xi eta conjugate. यहाँ पे बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपने इसको याद रखना है कि here we have taken, देखो रियल्स में हमने लिया था समेशन आई रनिंग फ्रॉम 1 to n xi eta, और यहाँ हमने लेना है xi eta conjugate, where eta conjugate इसको क्या लिखेंगे? denotes the conjugate of ni. So that's the conjugate of ni. So this is a statement, this is our second example that we will prove that the space c raised to power n is a inner product space under the inner product defined as this, where आगे लिखेंगे आप, where x is equal to xi1 xi2 so on up to xin, y is equal to eta1 eta2 so on up to eta n, और दोनों किसमें से आ रहे हैं? They all are coming from c raised to power n. Right? चलिए प्रूफ शुरू करते हैं. नंबर वन क्या है? What is number one? Number one is inner product of x and x. Same बेटा बिल्कुल वैसे ही चलेगा. Inner product of x and x is greater than or equal to 0 for all x belongs to c raised to power, for all x लिखा है c raised to power n, for all x belongs to c raised to power n. चलिए, so let's apply the formula here. This is summation I running from 1 to n. ये बनेगा xi conjugate. अगर यहाँ पे y होता तो y की जगह पे eta यहाँ पे आ जाना था. अब दोनों ही वेक्टर्स क्या है? सेम है. So this is summation I running from 1 to n xi mod square. आपको पता है z into z conjugate क्या होता है? This is always mod of z square. Right? So और हमें पता है ये क्या होता है बच्चे? ये क्या है? This is norm of x square and it is always greater than or equal to 0. So thus it implies inner product of x and x is greater than or equal to 0 for all x belongs to c raised to power n, and inner product of x and x is equal to 0 if and only if, अभी आपने लिखा समेशन आई रनिंग फ्रॉम 1 to n कितना बना था आपका? मॉड ऑफ एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0 इफ एंड ओनली इफ दिस इज नथिंग बट नॉर्म ऑफ एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0 इफ एंड ओनली इफ, सीधा ही आ जाएगा x इज इक्वल टू 0. राइट? सो दोनों प्रॉपर्टीज इसमें आपके पास होल्ड हो गई. नाउ वी विल डू द थर्ड प्रॉपर्टी, सेकंड प्रॉपर्टी. The second property is inner product of y and x, its conjugate is equal to inner product of x and y. पीछे बेटा for all x y belongs to r raised to power n, आप इसको कंटिन्यू करना. ठीक है जी? चलिए, उसके बाद है क्या लिखना है आपने? You will consider inner product of x, y and x its conjugate. So definition से आ जाएगा summation I running from 1 to n. बड़े ध्यान से देखना है, y की जगह आ गया eta i, x की जगह आ गया eta xi conjugate. क्या आ गया? कॉन्जुगेट. और इसके बाद पूरे के ऊपर क्या आएगा? कॉन्जुगेट. अब मैं इसको पूरा ओपन करूंगी. दिस इज दिस कॉन्जुगेट प्लस दिस इज दिस कॉन्जुगेट सोन अप टू n
xi n its conjugate and its whole conjugate. ठीक है जी. अब आपको पता है कॉन्जुगेट, कॉन्जुगेट का कंसेप्ट क्या कहता है कि डबल कॉन्जुगेट होगा तो वो इटसेल्फ सेम नंबर को रिप्रेजेंट करेगा. सो ये बनेगा n1 कॉन्जुगेट और ये बन जाएगा xi1 डबल कॉन्जुगेट. दिस इज eta 2 xi2 डबल कॉन्जुगेट. सोन अप टू eta n xin डबल कॉन्जुगेट और एक कॉन्जुगेट n eta n के ऊपर. ठीक है. नाउ हमारे पास रिजल्ट है z डबल कॉन्जुगेट इज ऑलवेज इक्वल टू z. तो ये वाला से ये वाले जो नंबर्स हैं जिनको मैंने टिक मार्क किया है वो क्या हो जाएंगे, सेम हो जाएंगे. सो दिस इज इक्वल टू eta 1 conjugate xi1 plus eta 2 conjugate xi2 soon up to eta n conjugate xi n. अब इसको हम इंटरचेंज कर देते हैं. xi1 eta 1 conjugate xi2 eta 2 conjugate. राइट. एंड ये क्या बन गया, दिस इज समेशन आई रनिंग फ्रॉम 1 to n xi eta conjugate. राइट. सो दिस कम्स आउट टू बी, ये क्या रह गया, ये बन गया आपके पास इनर प्रोडक्ट ऑफ x एंड y. सो देयरफॉर व्हाट यू हैव प्रूव्ड, क्या प्रूव कर लिया आपने. So thus inner product of y and x its conjugate is equal to inner product of x and y for all. So आप नेक्स्ट लाइन में आप इसको अगर और इनको शिफ्ट करना चाहते हैं so you can do. So this is the second property. Now the third property. थर्ड प्रॉपर्टी में क्या प्रूव करना है, for all alpha belongs to फॉर ऑल अल्फा. अल्फा अब यहाँ पे बेटा जी अल्फा क्या आएगा, अल्फा सी आएगा. अल्फा हमने कॉम्प्लेक्स लेना है बिकॉज सी रेज टू पावर एन के ऊपर वैसे दो कंडीशन है, अगर वो लीनियर स्पेस है वो ओवर सी भी हो सकता है, वो ओवर आर भी हो सकता है. ठीक है. चलो सपोज करो हम यहाँ पे अल्फा क्या ले लेते हैं, लेट अस टेक अल्फा बिलोंग्स टू सी and you have taken two vectors xi xii running from 1 to n and yi is equal to eta I running from 1 to n and all are coming from c raised to power. So let us consider alpha x comma y its inner product. So by definition this is summation I running from 1 to n. तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, alpha xi eta conjugate इस तरह से आ जाएगा. ठीक है. अगले स्टेप में बेटा अल्फा आपका बाहर आ जाएगा. दिस इज समेशन आई रनिंग फ्रॉम 1 to n. अब एक और स्टेप यहाँ लिख लो, समेशन आई रनिंग फ्रॉम 1 to n अल्फा xi eta conjugate इस तरह से. ठीक है. स्केलर मल्टीप्लिकेशन है ये. सो दिस कम्स आउट टू बी, दिस इज इक्वल टू right summation I running from 1 to n ni eta conjugate. So this comes out to be alpha into inner product of x and y. So ये आपकी third property हो गई. Now I am coming to the fourth property. Let x is equal to xii, y is equal to eta and z is equal to lambda. I running from, you can write I running from 1 to n, I running from 1 to n, I running from 1 to n. ठीक है जी. चलो सो सारे के सारे एलिमेंट्स किसको बिलोंग कर रहे हैं, सी रेज टू पावर. कंसीडर क्या करेंगे, यू विल राइट कंसीडर इनर प्रोडक्ट ऑफ, you want to prove this is equal to x plus z comma y plus z. ये हमें प्रूव करना है. सो कंसीडर, we will consider x plus y comma z. सेम जैसे बेटा लास्ट में आर एस टू पावर एन के लिए किया था समेशन आई रनिंग फ्रॉम 1 to n. अब यहाँ पे क्या आ जाएगा बच्चे, x plus the elements are xi eta not xi yi. xi प्लस इटाई और साथ में लास्ट में लैम्डाई कॉन्जुगेट, क्योंकि इस वाले के साथ ही कॉन्जुगेट लगना है. अब आप इसको ओपन कर लीजिए. दिस इज xi इटाई कॉन्जुगेट प्लस समेशन आई रनिंग फ्रॉम 1 to n इटाई xi कॉन्जुगेट. सो ये क्या बन जाएगा, दिस विल बी द इनर प्रोडक्ट ऑफ x एंड y प्लस इनर प्रोडक्ट ऑफ y एंड z. Hence the fourth property is also satisfied by this map. So last में आप लिखेंगे thus the map this from
C raised to power n cross C raised to power n to C, defined as inner product of xy is equal to summation I running from 1 to n xi eta I conjugate is satisfies is the yana satisfies all the four axioms of inner product. All axioms of inner product. Hence, C raised to power n, comma, this is an inner product space. Is an inner product. So that is the proof. The proof has been completed. Yes.